So, hi everyone, good evening to all. Welcome to StudyIQ YouTube platform. My name is Sibasankar with you. So, in this session, we will go through as the thumbnail you might have gone through. So, we will go through the May month current affair. So, we will go through that one, right? So, that would be helpful for all the exams you are appearing in the state PCS exams or any kind of state government exam which is being conducted in the Odisha. That would be helpful, pretty helpful for you all. Okay. So, with this we will start the current affair of May month current affair Odisha, right, for the PCS exam. The first important current affair here is, the first topic here is that UN human rights body flags relocation of the tribal dwellers from the tiger reserve. Now, so what is the issue? Issue is human rights, that is the UN human rights body that flags concern that how the tribal's right is been deprived, how the tribal right is been deprived. I means they think, they are having thought in the mind, the UN body of the, that is for the human right, that the human right of the tribals, the deprived section of India is been deprived, is been what? Deprived or is been compromised. Why so? Now why? Now the point is to be why. Now when it comes to why, the answer would be, right. Now why? So because this is in news, as in the May month it was in news, as you might have heard about the Similipal National Park, right? The Similipals is the second national park of Odisha. Earlier there was only one national park in the state. Now we are having two national parks. One is here Bhitarkanika and one is here what? Similipals. So we are having, as of now, the Odisha is having two national parks, right? So we are having two national parks. One, as I said, Bhitarkanika, right? So that would be your Bhitarkanika, and the second one is here Similipal. So that is two, right? So there is what? Two national parks. So we are having what? Two national parks. As we are having two national parks, that is the Bhitarkanika and Similipals. So there is what? The human rights body flags the concern, that is the जो tribal dwellers, कारण आम समस्ते जानीचे कि जो कोर एरिया टाइगर रिजर्व जो कोर एरिया सेठी कोनोसी लोक रही परिबो नाही बा विलेजर्स आर नॉट अलाउड टू ड्वेल्स देयर. That means we would not allow the, or that means what? There is a criteria. So we need to fulfill that criteria. We need to what? Fulfill that criteria. So that is what happening is that Similipal National Parks, as of now, the number of villages, the core areas of South Kosia was 5. The number of villages in the Similipals was 9. Right, that would be as of on May 27, 2024. So that was like that. So since the project inception, when the project started, like the project, as I said, South Kosia Tiger Reserve or the Similipals National Parks, now they are started what? The villages were relocated. Why? Because of NTA, obviously there would be NTA. So NTA will ask, obviously the NTA will ask. That means what? Here you can have the look of the Similipal Biosphere Reserve. This is what I would say, the Barhaipani waterfall, the beautiful Barhaipani waterfall, and the Similipal Biosphere Reserve is known for this. The Similipal Biosphere Reserve is known for this, that is the melanistic tiger, which is very famous in this region. In this region, this tiger is very famous, right? This tiger is very famous. That means you will have Royal Bengal tiger in this region, and here would be Barhaipani waterfall as well, which is the what? Third tallest waterfall in the country, So that is why. So this will have lost semi evergreens forest,
and some region also having the moist deciduous and the deciduous forest. But overall, the forest in this region is green, and that is dense forest region, right? In the rainy season, when it comes to the monsoon season, this region receive ample rainfall, and the majority of the forest in this region is semi-evergreen. That to be what? Semi-evergreen. And the dominant species would be your sal. There would be so much of sal forest and the teak, but teak is less dominant. The dominant is your sal forest. That is the species. I would say what? Sal species. That is the dominant here, right? So this is how you are having the Similipal Biosphere Reserve, and this is the only biosphere reserve of the state of Odisha. So right. So what is happening now? Now a point is that as the relocation of the forest dwelling tribals from the tiger reserve, right, Odisha, the Odisha is now one of the 18 states, one of the 17 states, I would say, or the 18 states where the relocation has been done. So UN Committee on the Eliminations of the Racial Discrimination, that is CERD, one of the UN human rights treaty bodies, उन्हें कहा कि भाई देखो उड़ीसा इज वन ऑफ द 18 स्टेट्स जहाँ पे ट्राइबल लोगों को ना वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? जो लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है. दो सेक्शंस आर ऑलरेडी marginalized section of what? That is the nation. Already marginalized sections of the what? Of the states, and that is why they are flagging the concern. But here is one thing you have to remember is that we are now, so let the state or I would say India, so मतलब ना इंडिया ना ओडिशा रे कौन सी प्रकार बा ट्राइबल्स को हमको कौन सी प्रकार हार्म्स करिबार सेमति किछ नाही. बट हमर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अछि जाको में एनटीए बोली कहउचे, राइट, कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीए, जून लास्ट ईयर से मैंने कहले कि ठीक अछि जो विलेजर्स माने रहउछंती चीफ वार्डन को कहगला कि भाई जो नेशनल पार्क्स भितरे बा जो प्रोटेक्शन एरिया रे बा जो कोर एरिया रे विलेजर्स होछि ताकू रिलोकेट करंतु ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? Wildlife Protection Act 1972. Otherwise there would be conflict, there would be what? Conflict of the wildlife, that may be a concern. So that is why the peoples had to relocate. तो ताकू relocate करिवार थिला सेथमे relocate कराचला दाकू concern जतैले कि आमे कहले कि UN ह्यूमन राइट्स बॉडी से माने कहबा के कथा भाई से मन तो से गोटी जगह रे थिले पुनी ताकू काहे कि relocate करा जाउछि. Why relocation? Right, कि why relocation? So that is why that was the issue. Now या ऊपर क्वेश्चन बहुत राशि छी. Let's say that means the tribals केतेटा state रहुछि 18 state and 1 UTs. How many is that? 75 PVTs is as there. Odisha 13 and PVTs is 12 in Andhra Pradesh. Right. So these are this kind of majority of the tribals, the prominent tribals, the largest tribes of India, that is the Bhil tribe. This kind of questions they may ask. Or what is the tribal population of Odisha? Let's say 22.5% of the total population of the state. That means almost I would say 1/5 or little bit of more. That is the population of the tribal population in the state. Whereas the tribal population, if it comes to the India, that would be roughly it would be 8.6% of the total population of India. Next, the next current affair we will come to the second one. Second one is that, right, so this is, there would be what? There would be some comfortable rooms. I means the topic is that ki comfortable rooms will be there. What is comfortable rooms? Now that means the deputy CM of Odisha, as I would say the Mrs. प्रभाती जी, उन्होंने कहा कि भाई देखो कि जेतेबेले कोनोसी लोक गोटे बस रे जाउची बा ट्रेन रे जाउची वुमन टीए से पिलां को तारा बेस्ट फीडिंग करिबारे ताको डिफिकल्टीज होउची. तेनु करी कि सबु बस स्टैंड्स मान करे, सबु रेलवे स्टेशन मान करे गोटे कंफर्ट रूम रहिबा दरकार. जो रूम रे से स्त्री लोकटी मदर मतलब इजीली सी कैन फीड द चाइल्ड, राइट, चाइल्ड को से फीड करि परिबो, right, breastfeeding would be easy. So that is why she said that all the bus stops, all the major railway station and the bus stops in the states within 2 to 3 months will have a comfort room, the room where the mother would be easily breastfeeding kari paribo taro छुआ को सेथि पई बा खीर दे परिबो कना इटा डिफिकल्ट सहिते तांको भी गोटे हम कहबा. सो दैट इज व्हाई तो ये टॉपिक हम कहि परिबा, राइट. सेथि पई ये टॉपिक टा हमर अछि कि मदर्स can what nurse their children and will be set up across the all bus stands, railway station, every other public places, right.
इन द 2 to 3 months सेटा को करा जो बोली कि कहले डेप्यूटी सीएम्स ऑफ ओडिशा कहले कि देखो सब जगह रे जो वुमेन माने ब्रेस्ट फीडिंग करछन्ते कंफर्टेबली सेमती करि परिबे ता पे गोटे रूम सेटअप करा जिवो ता पे गोटे कंफर्टेबल रूम करा जिवो राइट ए कथा से को दिन कहले ऑन द ईव ऑफ द मार्क द वर्ल्ड that is what menstruations day, that is what menstruations day. Then आउ कौन कहा जाइछि कि all the government schools and the offices will have that is sanitary vending machines. This is also a unique initiatives. All the schools, colleges, government buildings, that is the public places, right? I would say the institutions and offices, let the institution and offices to have the sanitary vending machine जेमती कि रमादेवी रे लगी that sanitary vending machine, let's say, so that what sanitations ba ami कहबा कि जो hygienic will improve among the women section and they would not shy away, and that would be a duty also, the moral duty of the ami कहबा बाकी rest of the societies also have the moral duties कि सेमन को मतलब support करबा and to respect them as well, their right as well. So that is why it's a good initiatives that all the bus stands, railway station, public places, schools, colleges, university, government building will have also. So these are going to have the comfort rooms as well as the sanitary vending machines will be in the school and universities will be there. So this is also a good initiative. So I would say rather whenever you are writing the mains questions, you can add into the women empowerment, you can add into the social justice, you can add into the, I would say, the moral duty. In ethics you can also do add this one also, right? There is a stigma, that stigma will be removed. So this is how you can add into the papers into the different next. So this would be is a very good initiatives, I would say. So rather it's a very good initiatives. So government is saying yes, it will take times 2 to 3 months, within 2 to 3 months we will have. So you can also add into the answer, right? Definitely you can add into the answer. Next we will go. Now see, there is many of you might have heard that Odisha peoples of many of the young boys they are moving out of the states in search of work. उड़ीसा डज नॉट हैव वर्क, ऐसे तो हमेशा हम सुनते रहते हैं कि उड़ीसा से लोग माइग्रेट करते ज़्यादा कर्नाटका, दैट स्पेशली हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत, दिल्ली, चेन्नई, राइट? दिस काइंड ऑफ न्यूज़ आर मोस्ट ऑफन इट कम्स अक्रॉस द रीजन्स एंड वी डू ऑल्सो, हमें भी ये सुनना पड़ता है, राइट? ना दिस टाइम टू उड़ीसा गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई क्यों ना थोड़ा वेज जो होता ना कि वेज को इंक्रीज किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो माउंटिंग ऑफ, as the inflation is going on, so we need to have what, so to ease that one, so honorable CMs of Odisha Mohan Charan ji उन्होंने कहा, announced that what he has announced, you can see that there would be 10 rupees daily wage hikes for the all worker categories effectively from the April 1st 2021. So that would be there. So this is also, but though this is April month, but I have added it to the May month because it's a important one. So that is why I thought to added it. Now what will happens now? Now the unskilled worker will get, that is what, 462 rupees, and the semi-skilled 512 rupees, and the skilled 562 rupees, right? And highly skilled it would be 612 rupees per day. So this would be there. So per day it would be what? Now unskilled it would be 462 rupees. That means almost it would be 12,000 something. It would be, let's say, for say I would say 12 and 15,000 it would be monthly, almost that would be there. Now skilled it would be 512 rupees per day, more than 15,000 again 15,000, and this is almost 20,000 and something, it would be like this. So this is how the what, now this is what welfare measures. Now this means, that means when you are hiking the price of the labor price on the basis of different categories, and this is also categorized like what, something you may say that is the unskilled, where the skilled, semi-skilled, highly skilled. So this kind of categorizations, this kind of what categorization, right? When we are doing such kind of categorizations, we are doing what, such kind of
categorizations as we are doing like this. See, so that is what will happens, that we would be able to retain the labor. जो लेबर फोर्स है ना वो उड़ीसा से बाहर नहीं जाएगा, उसको हम रिटेन कर सकते हैं. प्लस दिस इज ए सोशल जस्टिस, राइट. द स्टेट लाइक उड़ीसा दैट वी आर हैविंग there is a image that many of people are living in the below the poverty lines, but Odisha scenario has changed. It used to be, right. So there is a change in that. So this is what I would say welfare measure, so that certain section of the society they will definitely get the benefit, right. So that would be benefits will be there. Now the hike, why hike why the Delhi wage, कि जो दिल्ली रो आमे कहे दिल्ली जो काम करछन तांको काहे पैसा बढ़ा गला, एथि पई देखो काना गोटे फाइनेंशियल सपोर्ट आमे कोन कहबा, इट्स ए फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स ए व्हाट, financial support for them, right. This is a financial support. Just a minute. Yes, this one is a financial support, and the workers they will also encourage, there would be encouragement. Also आमे कहबा जो low income sections अछि सेमन को पई गोटे benefits मिलिबो, right. गवर्नमेंट्स एफर्ट्स आम कहीपर लेबर कंडीशंस टे को डिग्निटी मिल, प्लस आजिकल इनफ्लेशन तो ये बढ़ला, तो कौन हम इनफ्लेशन जो रेट्रे बढ़ुची से रेट्रे जब वेज भी न बढ़ तो पैरेलल हो पार, दैट वुड बी व्हाट आई वुड से खर्च तो अधिक हो, लोक जी इनकम कर अधिक तो खर्च भी हो, तेणुक वेज हाइकिंग कह जस्टिफाइड, जो ओडिशा गवर्नमेंट नहीं दैट इज जस्टिफाइड इन समहाउ, correct. So now we will come to the now Kalma Barrage in Chhattisgarh. Now why this is in news, this is also very important. This Kalma Barrage in Chhattisgarh, it's a important one. Why important one? कि देखो ये जो Kalma Barrage in Chhattisgarh ना कि important एथि पई, because this barrage is over the Mahanadi. जेतले Kalma Barrage Mahanadi ऊपर करूची Chhattisgarh, ultimately we are already having dispute of the Mahanadi river. We are already having Mahanadi dispute rivers, and you knows that. So since I would say 2018, and we are expecting in 2026, by 2026, there would the verdict will comes of the tribunals. The tribunal report or the verdict is 8. We are waiting for that on the Mahanadi river. Tribunals verdict अब तक आया नहीं, हमें wait करूँ कि Mahanadi rivers verdict केबे आसीबो, right. तो से कथा को नहीं कि हमें कहि परिबा, तेणु करके से तो आज जाए आसी नहीं, तो सेटा को अपेक्षा करछे, से भीतर आउ गोटे न्यूज आसी पहुँचुची कि कलमा बैरेज छत्तीसगढ़ करूची महानदी उपरे, ऑलरेडी आम पाखे प्रेशर बा वाटर कम अच्छी, एंड क्लाइमेटिक चेंज जो क्लाइमेट चेंज होची एलिनो कंडीशन चलुची, ऑलरेडी वी आर इन ए डिफिकल्ट कंडीशन. आज वी आर ऑलरेडी इन ए डिफिकल्ट कंडीशन, ता ऊपर जदि ये कलमा बैरेज वगैरह से करूचंती, देन इट्स ए व्हाट डिफिकल्ट टाइम ओडिशा पई हम कहबा difficult time, because that will restrict the flow of water. Definitely that will restrict the flow of water. Obviously हम कहबा कि flow of water तो कम ही ना, थोड़ी flow of water बढ़ी जो, so there would be what. Good evening Tejas, Susri Sangita as well. So good evening everyone, right. So Tejas is there. So that is why what is happening is that this Kalma Barrage in Chhattisgarh, so what will happens, right. Actually वो देखी नहीं तमन का message. Now this Kalma Barrage is that in Chhattisgarh, what happens, that will restrict the flow of natural flow of water, that will what restrict the natural flow of water. As I said already, Mahanadi is a disputed river, and जो आमे जो ट्राइब्यूनल टा बसिची, ट्राइब्यूनल टा एक्सपेक्ट कराउची कि बाय द व्हाट 2026 मार्च सुद्धा वर्डिक्ट देई देबो कुआ जाउची, राइट. तो जदि आसे गला बहुत बढ़िया कथा, बट सेही भितरे हमको ऑलरेडी टेंशन इज गोइंग ऑन, then this is like construction of the Kalma Barrage does not make any sense. This does not make any sense. So that is why, because see, the location is what over the Mahanadi. The location is what over Mahanadi, and what will, how, which district will be impacted? Jharsuguda will be impacted. So that is impacted. Current issue is what, the water is only one gate. That means ये जो कहबा केवल गोटे गेट देखि से माने वाटर छाडुचंती कलमा बैरेज रे, ता द्वारा कोन हबो, ओब्वियसली इंपैक्ट विल बी देयर, है ना. इंपैक्ट हम खास करी के बाद भाबो ए वर्ष तो ठीक ठाक एते समर एते डिफिकल्ट जाई नहीं, राइट. ए वर्ष समर एते डिफिकल्ट हमर जाई नहीं, बट अदरवाइज इट कुड हैपन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन सही पर थांता. तमे भाबो कि जदी हमें कहूचे, राइट,
तो एलिनो कंडीशन हे पार थांता किछि भी गोटे कंडीशन हबो दैट मींस वाटर फ्लो तो ऑलरेडी कम अछि तो आउरी डिफिकल्ट हे थांता राइट सो दैट इज व्हाई सो कोठी ना कोठी गोटे हमको सॉल्यूशन बाहर करिया पड़िबो आ ऊपर बहुत थोर मु डिस्कशन मध्ये करिछि कि जो डाउन स्ट्रीम रे जो माने अछंती ये तो अप स्ट्रीम रे अछि छत्तीसगढ़ कोन अप स्ट्रीम रे अछि तो दैट इज द डाउन रिपेरियन स्टेट दैट पर्टिकुलरली ऑफ ओडिशा वुड बी द सफरर तो आरो किछि गोटे सॉल्यूशन हमको बाहर करिक पड़िबो राइट तो आको हमें देखिबा नेक्स्ट टाइम छिबा नेक्स्ट आसीबा हमें कोन जादूपेडी किट कोन ये जादूपेडी किट नेक्स्ट इज व्हाट जादूपेडी किट ना ये कोन ये गोटे देखो इंपोर्टेंट टॉपिक्स मध्ये हमें कहबा जादूपेडी किट ना ये जादूपेडी किट कोन देखो ओडिशा गवर्नमेंट गोटे लॉन्च करूची जादूपेडी किट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ये कोन ये पिला को पई दिस इज फॉर द व्हाट अर्ली चाइल्डहुड जो रहिची हमर टू मेक द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन राइट मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव ए देटा मिसी जाईची एंड इफेक्टिव इट वुड बी मोर एंगेजिंग and effective for the what education that means it's a like a box it's a like a box तो जोटा को खोलिबो बहुत सारा आइटम्स थिबो गोटे पिलांकर इंटरेस्ट आसीबो द स्टेट इज स्पेंडिंग हाउ मच 90 crores फॉर दैट व्हाट केते स्कूल को दिया छिबो देखो द एनसीईआरटी डेवलप्ड किट अक्रॉस 45000 स्कूल आको किए डेवलप करिछि एनसीईआरटी डेवलप करिछि ताले जादूपेडी किट को किए डेवलप कला एनसीईआरटी डेवलप करिछि राइट targeted group kiye so that is ame कहबा the kit are meant for the preschool and early that is the grade learners मान को पई खास करे हम कहबा शिशु वाटिका आपरे मध्ये हमें बहुत आगु डिस्कस करछि कि एवरी स्कूल विल हैव शिशु वाटिका तो एठी जो माने हमें कहबा जो माने कम प्री स्कूल्स जो हेथाय जो चाइल्ड्स माने जानती हला जो हम कहबा तो सेठी माने कहबा लर्न करि परबे एटा किए डेवलप कला एनसीईआरटी डेवलप कला राइट ये कौन करिवो लर्निंग एबिलिटीज को पढ़ाइबो एनालिटिकल स्किल्स को व्हाट दैट इज एनहांस करिवे किट रे कौन कौन रहिबो देखिबा एथरे प्लेफुल्स मु कहली ना जे एमिति बाक्सटा खोली देबे बहुत सारा प्लेफुल्स रहिबो एंटरटेनमेंट्स रहिबो मटेरियल्स अलाइनमेंट रहिबो राइट अलाइन्स विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सहित आको करा जायछि सो दैट एंगेजिंग हबो पिलांकर इंटरेस्ट आसीबो पिला निजोकू मतलब फन एजुकेशन विथ फन टाइप रो गोटे हिजबो राइट अदरवाइज एटा कोन हिजबो डिफिकल्ट हिजबो हां तो आमे कहबा व्हाट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सेटा तो होई परबो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर रहबो कोन कहलो पिला को आमे जेमति कहूचे लेट्स से तब माने वी जो माने भी देखो यू आर द ग्रोन अप गाइस राइट आमे कहूचे इंडिया देखो ना इंडिया रे एठी होची इंदिरा कोल तमे बुझी जिवो बट वेदर स्टूड गोटे छोटो पिलाटा बुझी परबो कि ताकू जदि हम गोटे मैप देखैबा ताकू देखो ना एटा होची इंदिरा पॉइंट सो से इजीली लर्न करि परिबो दैट मींस हम कहबा पिक्चराइज फॉर्म्स से माने सिखि परिबे इजीली करि परिबे राइट जॉयफुल रहबो तांको पई राइट आमे कहूचे 1 रे 1 मिसले 2 तो भाबो एमती गोटे पेंसिल लाना आउ गोटे असला के देख 1 1 केतेटा हैला 2टा हैला तो एमिति जेतरा हम कहूचे दैट मींस इट वुड बी प्लेफुल इट वुड बी जॉयफुल तो पिला आउ डरिबे नाही एजुकेशन को से माने स्कूल जीवा पे मंगेइबे सो दैट इज हाउ के एजुकेशन को हमें दैट मीन कोन कि एजुकेशन विथ प्ले फन ए सब को नै कि हमें प्रमोट करि परिबा राइट सो दैट वुड बी देयर नेक्स्ट को आसीबा हमें नाउ काठोजोडी रिवर बैंक डेवलपमेंट प्लान आ गोटे आम इंपोर्टेंट करेन्ट अफेयर आमको देखा मिलो क्या पूर्व तुमने समस्ते जानी जिते नवीन बाबू सीएम थे से तालदंडा कैनाल को आई मीन इट्स अराउंड सम क्रोर्स दिखाई मोर मन पड़ूनी इट्स अराउंड 200 crores ना के मोर मन पड़ूनी एक्जाक्टली माइट बी रॉन्ग हो पारे मोर जो डेटाटा तो मन पड़ूनी सम क्रोर्स दिखाई जोटा कि ब्यूटिफिकेशन कराइला तालदंडा कैनाल समस्ते जान बोटिंग फोटिंग होता बट से अवस्था जहाँ देखिथो जहाँ भी तो सी गला परे वर्तमान गवर्नमेंट कहउछन्ती कि काठजोडी रिवर बैंक डेवलपमेंट कराचिबो राइट जेमति हमर साबरमती अछि देखो साबरमती तो सही भले तो हम करि परिबनी काना साबरमती इज और हम कहबा इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट हेछि एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लास जा भी हो तो कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी कहउछन्ती हैज प्रपोज दैट इज इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करबा हमें काठजोडी रिवर बैंक को हमें डेवलप करबा तले केते देखो प्रोजेक्ट रो स्कोप केते 200 acres नियर दैट इज आमे कहबा बारंग तहसील विथ फोकस ऑन द सस्टेनेबल प्लानिंग तो बारंग तहसील अंडर ए जो अछि तले रिवर सिस्टम कोन रहिबो ना काठोजोडी ये ब्रांच ऑफ महानदी ये तो हमें समझते जानि दिस इज आल्सो नोन टू एवरीवन हां कि नहीं एटा किए जानि राइट तो कॉम्प्लेक्स रहिबो जेमति तमरो बिलुआ खाई से गेला
एंड सीधुआ हो गला ये सब रीजन रही फ्लड कंसर्न रही तो एम्बार्कमेंट्स कर बंध कर राइट या ब्यूटिफाई कर फ्लड मैनेजमेंट हो पार तो ये सब को हो पार लोकल इंपैक्ट्स आम कौन कहबा कहीं लोकल इंपैक्ट ओब्वियसली जिते आम करुचे कौन जगह गोटे प्रोजेक्ट करुचे एम्प्लॉयमेंट विल कम्स देयर वुड बी डेफिनेटली आम कह एम्प्लॉयमेंट तो आसो ही आसो देयर वुड बी मोर एम्प्लॉयमेंट राइट एम्प्लॉयमेंट तो हम ही हम ब्यूटिफिकेशन हम रिवर्स फ्रंट को लोक अधिक जीवे सो दिस इज हाउ कि आम कह काठजोड़ी रिवर बैंक डेवलपमेंट काम को आसो ता द्वारा कौन हो एक तो रिवर हेल्थ इंप्रूव हम देख दैट विल इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द रिवर डेफिनेटली आम कहबा दैट इज द हेल्थ ऑफ द रिवर राइट एक मिनट जो हमारा हेल्थ रही हेल्थ ऑफ द रिवर दैट विल बी आल्सो इंप्रूव रिवर हेल्थ को आम इंप्रूव कर परिबा दैट वुड बी सस्टेनेबल एज वेल that will be sustainable that would be beautified आउ कौन हो पार it will be beautified and तो ये sustainable भी हो पार beautified भी हो पार long I would say what engagement means people will engage themselves कारण लोक मैंने एमती जाऊ ना जदि तुम चेयर फेयर पकईदेव टे ब्यूटिफिकेशन करदे लोक मैंने भी जीवे सो लोकों को इंटरेक्शन जो बढ़ो ना एनवायरनमेंट विल इंप्रूव दैट वुड बी देयर राइट सो जोते आम लोकल इंपैक्ट हमको देखा पड़ो जो आमर जिते आखपाखे जिते विलेजेस अच्छी जहाँ अच्छी जो रिमोट एरिया रही हेरिटेज डेवलपमेंट्स कथा नहीं जाओ से लोक मैंने एंगेजमेंट पाइबे तो ये सब आमको बेनिफिट्स एठू मिल जाव करेक्ट नाउ वाया बंधन कौन वाया बंधन हेल्थ कार्ड जो आम कह अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम्स फॉर द सिटीजन्स एबव 70 एंड मोर ताहले आम कह आयुष्मान भारत अंडर वाया बंधन स्कीम्स कर जो कार्ड दि जाव हाँ टूरिस्ट प्लेसेस जो तुम कह तेजस कौच कि सर टूरिस्ट प्लेसेस हो पार शिवलक्ष्मी ऑल्सो देयर राइट बिल्कुल हो पार ना ये जो आम कह वाया बंधन दिस इज व्हाट ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च करुच्ची वाया बंधन तो एथिरे कौन आसिबो सो दिस इज व्हाट दिस इज योर हेल्थ कार्ड इट्स ए हेल्थ कार्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम अंडर ए रही फॉर द सिटीजन above 70 and more that will be there what all the senior citizens that is age 70 and plus एमान को रहिबो अवेल करि परिबो बेनिफिट्स कोन देखे एमान को बेनिफिट्स रहउची एक्जिस्टिंग जेमति कि हम कहबा बेनिफिट्स रिगार्डलेस इनकम कोनोसी लोक ताको पाई परिबे राइट एक्जिस्टिंग जदि इंश्योरेंस अछि और फिर भी से पाई परिबो जदि कहार गोटे इंश्योरेंस करके रखी हेल्थ इंश्योरेंस फिर भी से पाइबो इनकम किसी एठी क्राइटेरिया नहीं देयर इज नो इनकम क्राइटेरिया समस्ते जो माने 70 प्लस सेमान को पई वाया बंधन कार्ड हे पारिबो अच्छा फॉर द व्हाट मेन सेक्शन केते 5 लाख फॉर द वुमन केते 10 लाख राइट मेडिकल ट्रीटमेंट्स एनुअली एटा कोन दिया जबो वुमेन्स पई 10 लाख एंड मेन पई दिया जो 5 लाख एटा रहबो एनुअली फॉर द ट्रीटमेंट को प्रकार ट्रीटमेंट साधारणतः एथरे ही परिबो को what kind of treatment ये जो 5 lakhs and 10 lakhs दिया जाउची these are for what kind of treatment these are basically for the secondary and tertiary health care ये प्राइमरी पाई तो नुह ना प्राइमरी तो इजीली एनीवन कैन अफोर्ड तो करि परिबो प्लस हमरो जेते तमरो मेडिकल्स वगैरह अछि चाहे से डिस्ट्रिक्ट लेवल कथा नहीं जाओ चाहे से ब्लॉक लेवल कथा नहीं जाओ कि गाँव रे जेते स्वास्थ्य केंद्र सब अछि ये तो प्राइमरी हेल्थ केयर तो इजीली दैट मीन सॉल्व हो जाउची आजिकली तो बाकी रहा जो टर्सियरी हेल्थ केयर कार गोटे सर्जरी हबार अच्छी कार राइट कार ये तो आम कह कॉम्प्लिकेटेड केसेस होगा हार्ट केसेस होगा लिवर केसेस होगा कि ये सब जो डिफरेंट केसेस होगा जोटि कि आम कह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रो काम आसी जाए एंड द पेशेंट नीड टू एडमिट फॉर द फ्यू डेज किछि दिन हो पारे ये भाई केस रे आम कौन कहबा इन दैट केस राइट इन दैट केस they need money so they need money and set पे एटी करा includes over that means केते देखो this will includes over 2000 medical procedures at compiled hospitals will be there the government supports what the government supports the scheme is fully funded by the state government offering health insurance not that is the हम कहबा health insurance not insurance
it's about health insurance. It's about health insurance. So this is all about, right? Correct. Now we will come to here. Now Similipals. So this would be okay. Now we have done this one. This one is done. Fully funded by the state government, offering the health insurance, right? So this is fully funded by the state government. So this is important because they might ask whether this is fully funded by the state government, whether this is for the what central government पैसा दउची कि नहीं, तो एटा को टिके मन रखिया पड़िबो, so that हमें ताकू खत्म करि परिबा. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट आसबो हमर सिमिलिपाल. ना ये देखो सिमिलिपाल 22 पर जदे सिमिलिपाल तो समझते जानचो 22 पर रिजर्व थिला ना, वर्तमान कोन हे गेला नेशनल पार्क ना, वर्तमान ये होची ओडिसा रो लार्जेस्ट नेशनल पार्क हे गेला. और भितरकनिका ऑलरेडी नेशनल पार्क्स थिला. दैट मींस वी आर हैविंग टू नेशनल पार्क्स. द सिमिलिपाल्स आमे कोठी अछि मयूरभंज. तल सिमिलिपाल्स कोठी मयूरभंज. मु कहि दिछि सिमिलिपाल्स होची गोटी 22 पर रिजर्व, जेहेतु दैट इज द ओनली 22 पर रिजर्व ऑफ इंडिया, ताहले it will have what? So if this is the only 22 per reserve of Odisha, sorry not India, Odisha, that means it will have questions. So obviously I am कहिबा questions आसीबो, obviously that would be question will be there. काना तार फंडाज होची कि गोटे ही 22 पर और क्वेश्चन पचारबेन कोन हबो को. अच्छा जा भी हो करेक्ट. जेतबे हमें कहूचे कि दिस इज द व्हाट 22 पर रिजर्व, हम कहूचे दिस इज द व्हाट 22 पर रिजर्व जेतबे हमें कहूचे, दिस वन इज अबाउट 22 पर रिजर्व. तो ये जो 22 पर रिजर्व पे हमें डिस्कस करथले कि देखो यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमिशन कहउछंती, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइज कहउची कि जो ट्राइबल्स लोकन कहउची जहां को डिस्प्लेस करगला, दैट इज नॉट फेयर एनफ. तो हमें एथरे कहबा ना हमर मुद्दा हैला कोन देखो, दिस इज व्हाट 845.70 स्क्वायर किलोमीटर फैली की होची एते बडो ना. ये रीजन काहे कि काना बिकॉज ऑफ द ब्लैक पैंथर, बिकॉज ऑफ द ब्लैक पैंथर एंड मेलानिस्टिक टाइगर्स. खास करके हम कहबा सिमिलिपल 22 पर रिजर्व रे मेलानिस्टिक टाइगर्स एंड ब्लैक पैंथर, right? Melanistic tiger is what? Simple. That means the black stripe because of the cross breedings and साधारणतः genetical modification एमती ही थाए. तो genetical diversity हम कहबा टाइगर, but there is a threat अछि. या पूर्व सिमिलिपल 22 पर मु बहुत रो पढै छी, जेतरे मु डेली करंट अफेयर नउथली मॉर्निंग सेशन रे, सेतरे मु पढैला बेले एक कथा मध्ये कहै छी कि जे सिमिलिपल 22 पर रिजर्व पर गोटे इनिशिएटिव लै छी मो सिमिलिपल. कौन मो सिमिलिपल. इवन सिमिलिपल 22 पर रिजर्व पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा सब लगी फायर को मॉनिटर करिया पई. एंड आउ गोटे मध्ये न्यूज रे थिला कि इवन रिलायंस मध्ये हाथ बढ़ाई कि हाउ टू स्टॉप द फॉरेस्ट फायर इन द सिमिलिफाई रीजन, इन द सिमिलिपल रीजन. तो एमती बहुत गुड़ा न्यूज सिमिलिपल सब न्यूज रे थाए हैला. ताहि से फॉरेस्ट फायर हो जाए और आम कहबा ब्लैक टाइगर जहाँ को आम कहे कौन मेलानिस्टिक टाइगर्स कथा नहीं जाओ, किंबा आम कहबा ब्लैक पैंथर कथा नहीं जाओ, और तुमको पचारि पारे और दे मे आस्क यू कि सिमिलिपल 22 पर रिजर्व रे जो फॉरेस्ट थाए डोमिनेंट फॉरेस्ट कौन. मु तो कही स्टार्टिंग रु कि सिमिलिपल 22 पर रिजर्व रे जो फॉरेस्ट थाए सेटा होची सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो डोमिनेंट फॉरेस्ट कौन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. और जो सिमिलिपल 22 पर रिजर्व रे हमर जो बरहीपानी वाटरफॉल रहिला, बुढ़ा बाळंक रिवर रहिला, राइट, गुरु महेशाणी, मेघासाणी, ये बादाम पहाड़, ये सब रीजन्स रे मध्ये हमें कहबा दिस आर द हिली रीजन्स रही. एंड ये होची छोटनागपुर प्लेटो रे एक्सटेंडेड पार्ट रही. एठी तुमको ड्राई डेसिडस, मॉइस्ट डेसिडस, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जिवो. एंड बायोडायवर्सिटी बहुत रिच हेरिटेज हम कहबा इंक्लूडिंग ट्राइबल पीपल्स मध्ये एठी रहउचंती, राइट. ताले हम देखिबा एथरे केते रहउची 55 मामल्स रहउची, 361 बर्ड्स एठी देखाउची, 62 रेप्टाइल्स देखा जाउची एंड 1000 प्लस प्लांट स्पीसीज मध्ये देखा जाउची. दिस इज 107th नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. सो दैट मीन्स व्हाट 100 एंड इंडियाज 107th नेशनल पार्क. तेणु ओपीएससी रे बा जो स्टेट रो जो एग्जाम सब हवा पई जाउची ये क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत अधिक, बिकॉज दिस इज द 107th नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, of the what country, the 107th national park of the country, and this is the second in the state, and second in the state next to Bhitarkanika. Bhitarkanika is the first national park, this one is the second national parks. Apart from that मु तुमको कहिची एथर मध्ये इंडिजिनियस ट्राइब्स मध्ये रहउछथि, जेमति कि मांकाडिया ट्राइब्स. तो ये सब ट्राइब्स मध्ये रहंती, राइट.
इकोलोजिकल सिग्निफिकेंस जति कहबी मु रिवर कथा कहि देछि बुढ़ावालांग रिवर सालेंती रिवर सो दिस टू रिवर्स मध्ये तमरा एठू ओरिजिन होछि टू रिवर्स राइट तो टू रिवर्स एटी हमको देखा जिवो फ्यूचर विजन कोन गवर्नमेंट रो विजन हैला कि आमे सेथरे केमती टाइगर्स नंबर संख्या को बढ़ेबा 100 करिबा तो टाइगर संख्या को केते 100 करिबा बाय 2036 सुधा एआई कैमरा यूज कराउची इको टूरिज्म को प्रमोट कराउची दैट इज जेनेटिक एक्सचेंज करा जाउची तो सिमिलीपाल रो फॉरेस्ट फायर केमती कमिबो प्लस एता तो तुम जानचो कि हमरो कोन जो फॉरेस्ट गार्ड ता जो पेट्रोलिंग करथला ताको जो मार देले पोचर माने फायरिंग करिकी सेटा भी गोटे सेंसिटिव केस एंड दैट इज मतलब सेंसिटिव एंड आल्सो हम कहबा कोठी ना कोठी गोटे आमको सचेतना बा इट्स ए साइन के नाउ यू हैव टू एक्टिव गवर्नमेंट को एक्टिव हाउ टू ये सब मध्य हम देखिछे त माने पेपर मध्ये पढिथिबो ए सब राइट त माने मध्ये पेपर रो पढिथिबो ए सब हां कि नहीं त माने पढिथिबो तो सिमिलीपाल आमे देखिदेले याको सिमिलीपाल से हिजबो एतिकी जे मानसून टाइम रे अधिक रेनफॉल हेइ थाए बाकी यदि क्लाइमेट तुमको पचारो तुमको एडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट अर्थात इट्स ए व्हाट इट्स ए सावाना टाइप ऑफ आमे कहि परिवा रीजन सावाना एडब्ल्यू टाइप ऑफ दैट मींस विंटर ड्राई इट्स ए ट्रॉपिकल विंटर ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट नेक्स्ट पाला बाइगण ये पाला बाइगण कोन ये पाला बाइगण जदि तमे कहबो ये जो पाला बाइगण दिस इज इंपोर्टेंट ये पाला बाइगण होची ना ये जीआई टैग पे अप्लाई करचंती ये जो पाला बाइगण ये ओडिसा रे ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रे हेइथाय ये ओडिसा रे ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से बहुत फेमस होची पाला बाइगण तो के पाला बाइगण कोन जो धला धला गोल गोल हेइथे मु देखेबी इमेज मध्ये तुम माने देखि देबो दिस इज द पाला बाइगण ये जो पाला बाइगण तुम देखुछो दिस आर द पाला बाइगण दिस इज वेरी फेमस इन द ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट एंड द नियर बाय रीजन राइट ये पाला बाइगण ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट्स they are seeking the GI tag एमाने चाहुचंती GI tag why because this is a unique brinjal in the state of Odisha this is the unique brinjal in the state of Odisha जोडे कि हमर जो ब्राह्मणी रिवर रहिची that means ब्राह्मणी रिवर जो नई पठा जा को हम ओडिया रे कहू on the bank of river that is but ब्राह्मणी रे चासो करूचंती माने historical significance का the brinjal has been cultivated for nearly I would say 500 years along the ब्राह्मणी river लगभग 500 वर्ष हो गेला कि ब्राह्मणी रिवर साइड रे बा नई पठारे दिस ब्रिंजल इज बीइंग कल्टिवेटेड और दे हैव बीन कल्टिवेटिंग तो ये बाइगण रो जोटा हम डिस्कस करले ना दिस वन इज व्हाट इज यूनिक ब्रिंजल राइट दिस पालो बाइगण जेतळ हम कहछे दिस इज व्हाट यूनिक ब्रिंजल्स हम गोटे कहिबा जोटा कि इंपोर्टेंट वन तो आकू कोन कह जीआई टैग ए माने सिकिंग करछंती दे आर सिकिंग द जीआई टैग राइट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कले एंड दैट इज द 500 इयर्स हेगला ये चाष ही आसुची तेणु ये गोटे इंपोर्टेंट आम कहबा राइट ना दिस इज व्हाट ना ये यूनिक फीचर्स कोन यूनिक होची ये बहुत खूब माने बहुत स्मूथ हेता है स्वीट स्टेट्स माने टेस्टी इट इज अ टेस्टी वन स्वीट वन लार्ज साइज ये बड़ा हेता है एंड यूज फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हेता आजकल तो चारियाडे तुम देखो पाला बाइगण भुवनेश्वर कटक चारियाडे तुमको देखा को मिलूँ सो दैट इज यूनिक वन साइज टी बड़ होता है व्हाइट होता है एंड एथरे बेसी ना सीड न थाए सीड एते खास न थाए इट्स अ स्मूथ मतलब जानिच हैला सो दैट वुड बी देयर खास करी भजा टिके भल लगे हां कि नहीं तो देन सॉइल स्पेसिफिक ग्रोथ द वैरायटी ओनली थ्राइव्स इन द सैंडी सॉइल्स एंड स्पेसिफिक क्लाइमेट्स दैट इज द नेटिव रीजन तो सैंडी सॉइल रे टिके अधिक होता है एंड जो ब्राह्मणी जो नई पठारे ये हेई कि आसुची दैट इज ए स्पेसिफिक क्लाइमेट इट हैज अडॉप्टेड से क्लाइमेट अडॉप्ट हो जाइए तार से बढ़िया होउची तार गोटे यूनिकनेस रही सो गुड इवनिंग शुभलक्ष्मी राइट सो दैट इज हाउ देन प्रिजर्वेशन एफर्ट कहबो कि जदि हमें जीआई टैग याकू मिली जाउची जो पाला बाइगण कथा हम डिस्कस करूचे इफ दैट विल गेट द जीआई टैग जदि ताकू मिली जिवो देन प्रोटेक्शन मिली जिवो यूनिकनेस अछि राइट सो दैट लोकंकर लाइवलीहुड भी आसी जिवो ए जो लोकल फार्मर्स माने अछंती ए जो पाला बाइगण जो माने चाष करूचंती द लोकल फार्मर्स दे विल गेट द बेनिफिट व्हेन जीआई टैग जेतळ मिली जिवो ना मार्केट डिमांड विल बी हाई एक्सपोर्ट मध्ये ही परिबो बाहर राज्य को मध्ये पठेई परिबो तो लोकल फार्मर्स दे विल गेट बेनिफिट तो एथरे खराब कोन सो लेट देम हैव द जीआई टैग्स एंड प्रिजर्व करि परिबो तार के डुप्लिकेशन करि परिबोनी तार मार्केट शेयर मध्ये रहिबो तो दैट वुड बी ऑल दिस थिंग्स तो लाइवलीहुड सपोर्ट्स मध्ये देखा राइट पाला बाइगण कथा हम देखिले राइट आउ कोन देखिबा हम देखा
जेमिति आम पाल बैगण रही सेमती नयागढ़ रे आउ गोटे रही सेटा हूँ तुम कंटेई मुडी ब्रिंजाल सो दिस इज ऑल्सो ये जो कंटेई मुडी ब्रिंजाल कहले ये पाल बैगणटा हूँ बड़ साइज ये हूँ छोट साइज ध्यान से शुणव तुम देखी धला आ गोटे बैगण अच्छी ये पूरा धला पाल बैगणटा कौन टिके बड़ साइज रमती तुम ये इमेज देख यहाँ कौन टिके बड़ साइज देखा जाऊँगी ये जो पाल बैगणटा बड़ किंतु छोट छोट भी गोटे आसे ना गोटे छोट छोट बैगण होता है छोट छोट गोल गोल छोट छोट तार स्पीसीसटा ही सेमती से छोट छोट ही होता है तो जोटा कि आम कहे जहाँ कहे कंटेई मुडी ब्रिंजाल नयागढ़ जहाँ जीआई टैग मिली राइट देयर इज नाउ ए ग्रोइंग डिमांड आल्सो demand to secure the what that is geographical GI tags for these distinct crops ताकू मध्य कह जाउछि कि भाई आकु भी दिया जो यदि ता पई करूछो पाळ बायगण इज ए यूनिक kind of brinjals for the generation local claims that the variety has a history and spans hundreds of years much like नयागढ़ कंटाई मुंडी ब्रिंजाल जमते नयागढ़ कंटाई मुंडी ब्रिंजाल से छोट छोट होई थाए हला तार गोटे यूनिक वेराइटी आम कहि परिबा तो सेमती ये भी गोटे वेराइटी आकु भी जीआई टैक्स दिया जाओ ओके नेक्स्ट हम जीवा ना ओडिशा टॉप्स इन लक्ष्यपति दीदी इनिशिएटिव्स ना लक्ष्यपति दीदी इनिशिएटिव्स कौन दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट तो दिस इज लक्ष्यपति दीदी अर्थात कौन मतलब कौन से गोटे जदि महिला जदि से आम कहवा वर्ष को लाख टका इनकम करुच्ची मास को नुह वर्ष को जदि लाख टका इनकम करुच्ची ताकू कह लक्ष्यपति दीदी ताली सी महिलाटी किए ही दरकार एसएचजी ग्रुप साधारणतः आम कह एसएचजी ग्रुप राइट ये जो आम मिशन शक्ति अच्छी तो से सब वुमेन को जदि आम कह वर्ष को जी 1 लाख इनकम करुच्ची कह लक्ष्यपति दीदी दैट मीन्स आनुअली दे आर अर्निंग एटलिस्ट 1 लाख ओडिशा हूँ इंडिया नंबर 1 ताले ओडिशा जदि आम कहवा दैट इज नंबर 1 तो नेशनल रैंकिंग देख ओडिशा टॉप पोजिशन रही तो कारण गवर्नमेंट टार्गेट केते सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ लक्ष्यपति दीदी करबा में के आम देश रे केते लक्ष्यपति दीदी करिवार टार्गेट रखी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ लक्ष्यपति दीदी अच्छा सेटा तो आगु को बढ़िबो घटिबो सेटा छाड़ दियो तो डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट आम कहबे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स 98% कैन यू इमेजिन दिस 98% नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स राइट एसएचजी वुमेन्स अर्निंग दैट इज आम कहबा राइट तो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉप करूची इनकम एम्पावरमेंट हो पारिबो दैट मीन्स नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से देख 98% कैन यू इमेजिन दिस नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट सब भाव कि यार गरीब तो ये देख लक्ष्यपति दीदी भरपूर अच्छा डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग इनकम एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स दिया जाउची फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सो दैट द सेल्फ इंडिपेंडेंस अमंग द रूरल वुमेन दैट मीन्स बेने से लक्ष्यपति दीदी केमिति इनकम हम के सपोज कुकुड़ा चाष कला किए गोटे स्मॉल इनिशिएटिव्स नहीं गला जंती छतु चाष करवा किछि भी करवा तो एमिति के कुकुड़ा फार्मिंग करवा तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव से माने नउछंती तो ता द्वारा कौन से इनकम बढ़ुछि सेल्फ हाँ तार छोट छोट कंटा भी थाए जोटा शुभलक्ष्मी कहूँ कि तार छोट छोट कंटा मध्य थाए तार जो डेम्फोटा टिके लंबा ही थाए राइट से भी ठीक कौच राइट तो ये जो आम लक्ष्यपति दीदी कहले वे वुमेन एम्पावरमेंट राइट ता द्वारा कौन हम से क्या डिपेंडेंट हेबे ना ऑलरेडी तो ओडिशा गवर्नमेंट एमती भी तो दौरान के 50,000 आनुअली तो दौरान मतलब सॉरी 50,000 कौच आम के जो तुम के दौरान आम कहवा के 5 5 10 10 हेले 5 वर्ष 50,000 हाँ तो 50,000 दौची एमती 50,000 दौची तो 10,000 तो एमती मिल जाऊँ हाँ कि नहीं माने वर्ष को एमती 10,000 मिल जाऊँ आउ 90,000 इनकम करूँ आउ कौन कि दैट मीन्स ये जो कौन आमर सुभद्रा योजना तो सुभद्रा 5-5-10,000 दुईटा किस्ती मिलगला बाकी रहा 90,000 से पुणी आउ बाकी बाकी स्कीम फी मिसिकी आउ 50,000 इनकम कले हो आउ कौन है 5-5-10 मिल आउ रहा के 90,000 आउ 90,000 पुणी डिफरेंट स्कीम फीम अच्छी से किसी आउ कि मिल जहाँ निजे इनकम कर कौन लक्ष्यपति राइट तो सपोर्ट मेजर्स आम रहा जमती कि एसएचजी ग्रुप्स कथा आम कहले कि स्किल ट्रेनिंग भी होगला से तुम कुकुड़ा चाष कर फार्म्स कर किए छेली चाष कर किए तार छतु चाष कर किए तार डिफरेंट किए गोटे कह कि ना मु ऑर्गेनिक फार्मिंग करी सेमती डिफरेंट डिफरेंट किए कर
किए कह मु गोटे बड़ी पापड़ ये सब गोटे माने ताकू गोटे बिजनेस कर पर एमती डिफरेंट बिजनेस करूछंती जेमती बहरमपुर साइड तुम देख वुमेन्स माने तेरा एंटरप्रेन्योरशिप करते बहुत पॉलिसी इंपैक्ट रहिबो ओडिशा रे हम कहबा जो एसएससी ग्रुप रही तो मैंने बहुत डेवलप एक्चुअली ओडिशा रे जो एसएससी ग्रुप ना बहुत स्ट्रांग भी दिस रिफ्लेक्ट द ओडिशा स्ट्रांग ग्रास रूट गवर्नेंस तादर हम कोन ग्रास रूट गवर्नेंस अधिक नहले 98% केमती सक्सेस मिलला सो दैट मीन्स जहाँ भी स्कीम आम करूचे ग्राउंड लेवल को पहुँचुचे सो दैट सिग्निफाइज तो ये हमको गोटे गुड मतलब बहुत भल कथा दैट है ना सो ये सब को आम आसीज तो बाकी राइट तो यहाँ दि जाऊँ नेक्स्ट वी विल कम्स अच्छा देखा पीएम निजे मध्य ग्रीटिंग करुले कि महाराष्ट्र गोटे सभा पीएम मोदी जी मध्य लक्षपति दीदी कहते द वुमेन एम्पावर हियर हैज इंस्पायर द एंटायर कंट्री महाराष्ट्र गोटे से सभा कहते पीएम निजे कहते देखिपर इमेज द ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र हैव बीन क्रिएटेड बाय द ब्रेव एंड करेजियस मदर्स ऑफ दिस प्लेस द वुमेन पावर्स हियर हैज इंस्पायर्ड द एंटायर नेशन गोटे सभारे से कहते तो मुझे गोटे पिक्चरटा आनिकी देखी तुमको खाली गोटे देखापी कि हाँ लक्षपति दीदी कौन ना ममता स्कीम ऑल्सो इंपोर्टेंट स्कीम्स तो ममता स्कीम जब हम कहवा सो दिस ममता स्कीम्स ताले ममता स्कीम्स ओब्वियसली अगेन तुम कहवा कि वुमेन एम्पावरमेंट अगेन दैट वुड बी व्हाट सोशल जस्टिस तो ये सब को से ही लिखा पड़ो देखो ये खाली भावन कि आम प्रिलिम्स पढ़ुचे ना अल्टीमेटली तुम जहाँ पढ़ुच प्रिलिम्स पढ़ले मेन्स रे भी यूज हम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ओनली यू नीड टू कनेक्ट इनटू द डिफरेंट पेपर दैट डज नॉट मीन्स के भाई मु लक्षपति दीदी पढ़ी ओनली वुमेन एम्पावरमेंट लिखो ना दैट इज ऑल्सो फिनान्शियल आई वुड से व्हाट एम्पावरमेंट दैट इज ऑल्सो फिनान्शियल इंक्लूजन दैट इज से एंगल को एमि पेपर 3 को कनेक्ट कले देन वुमेन एम्पावरमेंट पेपर 2 को सोशल जस्टिस को करि परिबो जेंडर जस्टिस मध्ये तमे कहि परिबो सेंती इथिक्स को मध्ये तमे जाई परिबो तो डिफरेंट एंगल रु तमे ताको यूज करि परिबो गोटी टॉपिक को हमें चारिटा पेपर केमती यूज करबा दैट इज द आर्ट ऑफ लर्निंग राइट सेटा को तुमको सीखी जदि जीवो अल्प रे मध्ये तमे अधिक लिखि परिबो काना मो पाखरे गोटी एग्जांपल मु चारटा जगह लिखि परिबी सो दैट इज व्हाई दैट वुड बी मोर इफेक्टिव रादर देन कलेक्टिंग सो मच ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स देन कंफ्यूज हे जवा कोठी कोन लिखिबा हाँ सो नेक्स्ट हम जीवा ताले हम देखबा के पॉलिसी डिसीजन तो ये कोन करा गला देखा ना ये थे कौन कि ओडिशा कैबिनेट अप्रूव करला कि ताको मर्जिंग कर दबा का सेता ना PMMVY सहित मर्जिंग कर दबा भाई मर्जिंग कले कोन हबो मर्जिंग कले बेनिफिट्स पाइबो कोन तो दिस इज फॉर द व्हाट प्रेग्नेंट एंड द लैक्टिंग वुमेन्स टू रिसीव एटलीस्ट हम इंप्रूव एंड स्ट्रीमलाइन सपोर्ट ताको कोन सपोर्ट मिल जिवो राइट बेनिफिट्स मारियो जेमति हम कवर डिलीवरी ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स मध्ये मिल जिवो अंडर द सिंगल्स नेशनल स्कीम कहीं डिफरेंट स्कीम हम मर्ज करदे ओडिशा गवर्नमेंट गोटे करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे करिवो तो इफेक्टिव हे परिबो ना इट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आसी परिबो रिड्यूस द ओवरलैप से गोटे स्कीम करिवो ये गोटे स्कीम करिवो भाई गोटे स्कीम कर दियो मर्ज कर दियो बेटर रहिबो इंप्रूव द फंड एबे खर्च दी जण करथांता बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट देई थाने 5000 5k स्टेट गवर्नमेंट देई थाते लेट्स से 6k 11k भाई दी जण मिसी की 10k देई दो ना आउरी 1000 टका तमर बंचिबो राइट सो दिस इज हाउ एफिशिएंसी आसीबो ओवरलैपिंग ही परिबोनी लोक भी कंफ्यूज हबनी कि ता पई गोटे अप्लाई करो आ पई गोटे अप्लाई करो तो कंफ्यूजन हबर नाही सो दैट इज व्हाई कंफ्यूजन भी हबो नाही तो एथरे न्यूट्रिशन बढ़िबो हेल्थ केयर बढ़िबो मदरहुड बढ़िबो एंड इन्फांटिसाइड मध्ये कमी जिवो मैटरनिटी जो आमे कहबा के मैटरनल जो मोर्टालिटी थाए MMR जहा को हम कहे से मध्ये कमी जिवो राइट अच्छा ये सब मध्ये हमको देखा को मिलिबो अच्छा ये पूरी इशू को मध्ये आसीबा जो पूरी इशू चलची ममता दीदी जो इशू करके रखी धाम ये जो धाम कांसेप्ट को भी हमें आसीबा बट एथरे वुमेन एम्पावरमेंट रे तमे आगो टिके ध्यान से पढ़िबो ए जो धाम कांसेप्ट ममता दीदी करके आनी चंती राइट ये देखो हमें ना धाम ये कौन ना जगन्नाथ धाम करके जो दीघा रे कले ये कंट्रोवर्सी हे गला सेथिरे ये कंट्रोवर्सी रे ये जो दीघा रे जो जगन्नाथ टेंपल हैला ये कंट्रोवर्सी रे घियो किए ढालिले
माने ये कंट्रोवर्सी आम लोक निजे ओडिया लोक आमरी ओडिया लोक एठू नना जाकि पूजा करवा काठ चोरई की भगवान को तैयारी करवा सेठी तो डिफरेंट एस्पेक्ट रे आमे देखिचे कि ये रीजन रे कोठी ना कोठी राइट तो आमे कहबा ये ठीक है नहीं मतलब भगवान को नहीं कि पॉलिटिक्स भावुचंती कि मु यदि दीघा रे इफ वी विल हैव ए टेंपल इन द दीघा ताले बेंगल रो लोक ओडिशा जिबे नहीं तो से जो टूरिस्ट आमर एठी रहि जिवो बेंगल रे पैसा रहिबो ओडिशा को पैसा मिलिबनी पुरी रो होटल और रिजॉर्ट चलिबो नहीं दिस इज व्हाट सी द थॉट ऑफ द पीपल ए बळे चिंताधारा भाई तमे पैसा पे भगवान को कंप्रोमाइज करूछ जो कहती बा बेंगल रो लोक बा कहती 6 मास को थरे से माने आसंती से माने बेंगल रो लोकंकर गोटे अछि कि एटलीस्ट से माने 6 मास रे थरे पूरी आसीबे वर्ष को दी थर पूरी आसीबे से माने राइट तांकर गोटे थाए एटलीस्ट जे दी थर आसी परुनी से थरे आसीबे राइट तो ऑब्वियसली जो चारि धाम रहिछि सबठो श्रेष्ठ धाम होछि कोन जगन्नाथ धाम भाई ये जगन्नाथ कल्चर रहिछि ये कल्चर रो किछि अलगा रहिछि तार महत्व किछि अलगा से मतलब ममता दीदी को कुहाडी जाना पड़िबो बुझि पछ तांको तो दिमाग तो तांकर सटके अछि केतलो कोन भाबवंती कोन करंती सेटा भगवान भी जानंती राइट तो जा भी हो तो ये भले केस रे ओडिसा रो नना जिबा तांको बॉयकॉट मध्ये करा जायथिला जानथिओ के से जो सेवायत जायथिले जे पूजा करे पे तांको बॉयकॉट भी करा जायथिला एंड होप तुम माने मध्ये जानिछ दिस इज नॉट फेयर के आमे जगन्नाथ कल्चर गोटे अछि बा धाम कहले से जगन्नाथ धाम कहले केवल पुरी को ही बुझाए ओडिशा गवर्नमेंट मध्ये सेथरे अपील करथिले कि भाई जगन्नाथ धाम कहले ओनली पुरी को बुझिबो सेटा जगन्नाथ टेंपल ही परे नॉट जगन्नाथ धाम ही परिबोनी जगन्नाथ टेंपल तो ओडिशा सारा भी बहुत अछि इंडिया सारा भी बहुत अछि दिल्ली रे भी अछि बॉम्बे रे अछि बेंगलोर रे अछि जुआडे जो जगन्नाथ टेंपल अछि इवन वाशिंगटन रे भी तुमको जगन्नाथ टेंपल देखा जिवो राइट ता अर्थात नो कि सब धाम तो धाम तो ही परिबोनी ना धाम कहले में केवल गोटी कहबा दैट इज जगन्नाथ धाम सेडे ही परिबोनी कना ये जो हमर इष्ट देवता राइट खाली हमर नो ये देशर पूरा जगतर नाथ बा जगन्नाथ तेणु ये जो सिस्टम कहले बेंगल गवर्नमेंट ताको ऊपर बहुत इश्यू चली तेणु आकु तमे कोन करबो जेमति बे रथ यात्रा आसुची आ गुडे करंट अफेयर आ ऊपर देखा होतला कि जो रथ यात्रा पई जो हमर काठ दरकार भे जो भगवान कर जो रथ तयारी पई सेडे भी आजिकली टिके डिफिकल्ट होची रथ कलेक्शन माने काठ कलेक्शन रे डिफिकल्ट होची राइट तो ता ऊपर भी तुमको देखिया पड़े कोठी कोन जगन्नाथ कल्चर को पढ़ी देबो टिके रथ यात्रा केबे हुए को दिन रथ खळा कार्य स्टार्ट ही थाए ऑब्वियसली ये सब जो रीति नियम अछि टिके अधे जगन्नाथ पांची राइट ये सब जहा छ मादला पांची जो हिस्ट्री जगन्नाथ कल्चर कर हिस्ट्री जगन्नाथ कर जाना पड़े ये सब जहा छ बेसिक आइडिया तमन रखियो पंचरथ स्टाइल कोन राइट चैरियट फेस्टिवल जो ही था ये केवेटो आसुची छेरा पहरा किए करे जो बेसिक आइडिया मु कहूची बाकी मु टेंपल आर्किटेक्चर को जाउनी कि एटा पंचरथ स्टाइल सप्तरथ स्टाइल राइट ये मेघनाथ पाचर अछि ये चारि जुहार अर्श द्वार व्याघ्र द्वार हर्ष मतलब ये सब जो अछि सिंह द्वार राइट ये सब जो चारटा जो द्वार रहिची ये सब द्वार रहिची ये सब तुम माने पढिबो राइट है ना आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करके से पचारि पारंती जगन्नाथ कल्चर को किंबा जगन्नाथ कल्चर रे कोन कोन रहिची राइट कार फेस्टिवल कथा नहीं जो जहाँ सब रही तमें कवर करिवो राइट सेटा आर्ट एंड कल्चर मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो तो ये पूरा आमे किछि टॉपिक्स देखली कि ना 1 आवर सेशन रो मो रखितली मोर टार्गेट थिला कि 1 आवर सेशन रखिबी बेसी रखिबिनी हैला ठीक अछि एक मिनट नेक्स्ट आसीबा आमे नाउ ओडिशा begins drives to identify the what deport the illegal Bangladeshi nationals ना देखो बांग्लादेशी नेशनल आजिकली तमे देखिबो जेते हमरो रोहिंग्या साधारणतः आम कह रोहिंग्यास एंड इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स माने दे आर एनक्रोचिंग इनटू द कैनाल्स दे आर एनक्रोचिंग इनटू द रेलवे लाइन रेलवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बस स्टैंड्स कोठी अछि जोठी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज देखुचंती से माने सेठी जाकी घर करके रहउचंती रोहिंग्यास एंड दिस इलीगल बांग्लादेशी जोठी जोठी अछि ताको कोन करा जबो स्टेट वाइड एक्शन विल बी लॉन्च राइट ताको लॉन्च करा जबो ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए मेजर कैंपेन्स to locate the Bangladeshi national living illegally और से मान को पठा जिवो डिपोर्ट करा जिवो टारगेटेड एरिया आइडेंटिफाइड करछि फोकस ऑन द कोस्टल रीजन border district with the what reported presence of undocumented migrants verification करा जिवो mechanism authorities are checking the documents such as voter ID Aadhaar card
राशन कार्ड जो नकली धरिकी से बसुँच कौटू आस ना भाई मुर्शिदाबाद रू जहाँ शुणव देन लीगल एंड डिप्लोमेटिक स्टेप्स एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को कह भाई देख ये जो इलिगल्स बांग्लादेशी मैंने अच्छा मैंने बहुत नुइसेंस करुँच ड्रग बिजनेस करुँच एटा करुँच सेटा करुँच राइट तेणुक देख so that is why this is like that so legal and diplomatic steps मते निया जबो security justification मते कारण तमे देखो कि because of what the situation in the Bangladesh is grave situation Bangladesh रो गवर्नमेंट स्टेबल नु केतल तांकर वर्तमान जो अछि हमर कोन यूनुस एंड जो मिलिटरी हेड तांको भीतर पडू नाही देयर इज ए चेंज करेंसी चेंज कर देले दैट अवामी जो लीग थिला दैट मीन शेख हसीना तांको जो बापा थिले रहमान मुजिबुर रहमान द फाउंडिंग फादर ऑफ द बांग्लादेश भावोजी फाउंडिंग फादर तार मुंडो को हटाई देले तार पिक्चर को नेशनल करेंसी रो हटाई की करेंसी चेंज कर देले सो मतलब दिस इज द चेंज तांको मूर्ति को भांगी देवा सो दिस इज व्हाट द रेडिकलाइज्ड द यूथ आर गेटिंग रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान सपोर्ट करबा स्टार्ट करूची चाइना सपोर्ट करबा स्टार्ट करूची सो सिचुएशन इन बांग्लादेश इज नॉट गुड दैट इज व्हाई वी हैव टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट बट आज ऑफ नाउ आमको टके स्ट्रिक्ट होवा पड़िबो अदरवाइज टेररिज्म इनफिल्ट्रेशंस ड्रग्स ये सब देखा जाओ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दैट मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब आमको देखा जाओ दैट इज व्हाई वी नीड टू बी कॉन्शियस आमको भी कॉन्शियस होवा पड़िबो कारण ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आम पई एंड ए खाली गवर्नमेंट रे दायित्व नो दिस इज द ड्यूटीज ऑफ द एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई देम एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस राइट Tejas coach sir, it's a big national issue. So these are the topics are there, right? You have to encroachment into the encroachment भी करूँचंती कहना बहुत सारा जगह रे तमे देखो भुवनेश्वर आउटस्कर्ट रे खास करके आई वुड से इन द कैनाल एरियाज इन बट इन द आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर से माने बहुत जगह रे सब देखिबो रहउचंती एंड धीरे धीरे रही जेबे एमती ही होउची local peoples also do they are also supporting somehow, right? So this is all about the today's sessions. पूरा तो आम देख मे मंथ गोटे मसर करेन्ट अफेयर 1 आवर सेशन खत्म करी हबो नाही सो इट विल बी पार्ट 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 करके आम ताको एंड करियो आउ गोटे दिन आउ किछि रखि देबा आम सो दिस इज हाउ वी विल डू लाइक दिस ओके सो विथ दिस आई विल एंड द टुडेज सेशंस एंड वी विल हैव अदर पार्ट्स एज वेल बट नेक्स्ट पार्ट्स आनी कि आउ किछि आम ताको कवर करे पिन चेष्टा करबा विथ दिस आई विल एंड द सेशन गुड नाइट टू ऑल।